एवरीवन, इट्स मी आकृति पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 9 क्वेश्चन आंसर द लेक ऑफ इनेस्फ्री। जो चैप्टर हमारा द लेक ऑफ इनेस्फ्री पोयम है हमारा, जो है चैप्टर 4 का, आई थिंक, हाँ चैप्टर 4 का। तो द लेक ऑफ इनेस्फ्री उसका क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करवाई थी। देखो, मैं चाइल्डहुड पे डायरेक्ट पहुंच गई थी, लेकिन बीच में जैसे द स्नेक एंड द मिरर और द लेक ऑफ इनेस्फ्री ऐसे ऐसे चैप्टर 2-4 नहीं हुए, तो मैंने सोचा पहले उसको करवा देते हैं। बहुत दिस वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहीं करवा पाई। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे लिखा है थिंकिंग अबाउट द पोयम। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनेस्फ्री, मतलब किस प्रकार की जगह थी इनेस्फ्री, उसके बारे में सोचिए। और पहला दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर, स्टैंजा फर्स्ट। व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, स्टैंजा सेकंड। Question number 3 is what he hears in his heart core even when he is far away, for Inessfree, stanza 3rd. So answer of the first is the poet wants to build a small cabin of clay and wetless. वो एक small cabin बनाना चाहता था clay और wetless का. He wants to plant 9 rows of bees. He wants to keep honey bees. सेकेंड का आंसर देखिए, ही हियर्स द क्रिकेट सॉन्ग, ही होल्ड्स इनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, ही सीज ग्लिमरिंग मिडनाइट एंड ग्लोइंग रूम्स। थर्ड का आंसर देखिए, व्हेन द पोएट इज फॉर अवे फ्रॉम इनेस्फ्री ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर वॉशिंग द शोर इन हिज हार्ट कोर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम। बाई यू मे हैव कंक्लूडेड द इनेस्फ्री इज द सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड प्लेस, हाउ डज द पोएट कंस्ट्रक्ट्स it with where he now stands, read stanza second. So this is the question number second. The answer of this question is the poet contrasts the clay and the wetless made cabin be loud glad morning with dews and the cricket songs midnight, the glimmer with purple glow evening with linnets and song lake water lapping with low sound by the shore, etc. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डू यू थिंक इनेस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और द स्टेट ऑफ मिड डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ द बॉयहुड डेज? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्दो इनेस्फ्री इज अ पोएट बॉयहुड and it also represents his state of mind. The poet wishes to escape to Innisfree as it more peaceful than where now the city. Innisfree is the representative of the what the poet considered in ideal place to live, which is devoid the restless humdrum of the life. Yes, the poet actually misses the place of the boyhood days, even when he always from the Innisfree recalls sound of the take water washing the shore. So the next question is on given on page number 55. उसका देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनेस्फ्री। बी लाउड ग्लैड इवनिंग फुल ऑफ द linnets wings, the lake water lapping with low sounds. What picture do these words create in your mind? ये वर्ड्स आपके दिमाग में कैसा चित्र क्रिएट हो रहा है इन वर्ड्स को सुन के। आंसर देखिए, दीज वर्ड्स आर ब्रिंग आवर माइंड द इमेज ऑफ बजिंग बीज एंड दीज वर्ड्स ब्रिंग अप द इमेज ऑफ द linnets flying across an evening sky. These words evoke not only the image but also the soft sound of a lake water washing the shore. Look at these words, peaceful comes dropping, slow dropping from the valleys, morning where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think comes dropping slow from the valleys and morning? What does to where the cricket sings means? So the answer of this question is the given lines indicates the peaceful of mind can be slowly acquired from the
natural surroundings. It is peaceful that comes dropping slow the valleys of the morning. The phase to where the cricket sings indicates a peaceful place where one can hear the vibrate sound of the nature sound, such as the songs of the cricket at the time of the dawn. सो बस कुछ इतने क्वेश्चंस थे, कितने थे मैं आपको दिखा दूँ, इतने थे यहाँ तक जो है, और इनके क्वेश्चन आंसर आप जो है कर लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। नेक्स्ट इंग्लिश की कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाऊं आप बताइए। मेरा मानना है पहले पूरी बिहाइव खत्म कर देते हैं, फिर पूरी मूवमेंट। अब मैं डेली एक वीडियो ला रही हूँ रेगुलर, तो आप बताओ कल किस पे चाहिए। कल आई मेरा मन है द स्नेक एंड द मिरर पे, तो देखा जाएगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड लास्ट में इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कहते हो एक शॉर्ट से स्पीच टीचर्स डे पे, चाहे एक शॉर्ट से स्पीच रिपब्लिक डे पे, तो जो आप जो है मेरे एक सेकंड चैनल है, मतलब वो पहला ही मेरा चैनल था, ये बाद में ओपन किया, नॉलेज विद आकृति, उसको मैं मेंशन कर दूंगी टाइटल में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। नॉलेज विद आकृति, उस पर मैं स्पीच की वीडियोस डालती हूँ, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।